हाय नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोनाउंस एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। व्हाट इज मीन बाय प्रोनाउंस? प्रोनाउंस इज अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन। अ प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अक्षिता इज अ टॉल गर्ल। अक्षिता स्टडीज 5th क्लास। अक्षिताज हैज़ अ सिस्टर। अक्षिताज सिस्टर नेम इज संस्कृति। In the above sentence, if you observe, we used a proper noun Akshita repeatedly. Instead, we can say use she. It can be written as, अगर ए ऊपर के हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो प्रॉपर नाउन रिपीट हो रहा है, वो कौन सा? अक्षिता। एग्जाम्पल अगर हम प्रोनाउंस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो, अक्षिता is a tall girl. She study in class 5th. She has a sister. Her name is Sanskriti. Some example of pronouns are, for example, he, she, it, you, they, we, us, our, their, ours, yours, etc. अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउंस मीन्स पुरुषवाचक सर्वनाम। अ पर्सनल प्रोनाउंस रेफर फॉर पर्सन और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, हरी इज अ क्लेवर बॉय। हरी स्टडी इन क्लास 5th। हरी प्ले फुटबॉल। यहाँ पे प्रोनाउंस रिपीट कौन सा हुआ है? हरी। इंस्टेड ऑफ हरी वी कैन यूज ही। Some of the personal pronouns are I, we, you, he, it, she, they। पर्सनल प्रोनाउंस में हम ए प्रोनाउंस यूज करते हैं। सेकेंड, पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव ओनरशिप or belongingness to someone or something. For example, this is my book. Second, this book is mine. Here, mine show the possession. Some of the possessive pronouns are mine, ours, yours, her, its, theirs. Number 3, डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम। अ डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस रिप्रेजेंट अ थिंग और थिंग्स दैट नियर और फार। Generally, we use domesticative pronouns to indicate or point of things, but sometimes we also use for peoples when the person is identified. For example, hi, this is Raghu। डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में नियर और फार मीन्स दूर है या नज़दीक है वो इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू सीक इंफॉर्मेशन। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom, what, which, whose, who, whom, and whose are used for person, whereas what and which are used for things. Interrogative pronouns में हम who, whom and whose are used person के लिए करते हैं यूज, and what and which things के लिए यूज करते हैं। For example, Who did we meet yesterday? Who, whom यहाँ पे यूज किया है इंटीग्रेटिव प्रोनाउंस पर्सन के लिए, एंड व्हाट एंड विच ए यूज किया है थिंग्स के लिए। 5, रिलेटिव प्रोनाउंस।
means संबंधवाचक सर्वनाम. A relative pronouns is used to show the relation of two words or two sentences. There are 5 basic relative pronouns. There are who, whom, whose, which, that. Who and whom generally refer to person. For example, he is the man whom I met him yesterday. Whose refer to possession. For example, the man whose daughter on the tournament is my. Which refer to things. For example, I found the book which I lost. यहाँ पे which is the relative pronouns that refer to things and people. For example, this is the book that I lost. Next, emphatic pronouns. Emphatic pronouns stands for personal pronouns. They emphasize the action of the subject. For example, I myself cut the fingers while chopping vegetables. Emphatic pronouns are myself, herself, itself, himself, ourself, etc. इस एग्जाम्पल में emphatic pronouns कौन सा आया है? myself. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.